I gave you the mathematical formulas for them, isn't it? For semicircular ring, the center of mass is at a height of 2r upon pi along the axis of symmetry, where r is a radius. For a semicircular disk, it's at a height of 4r by 3 pi. For a hemispherical Yes, sir. shell, it's r by 2. Okay. Did we derived center of mass for a thin uniform rod of length L by method of integration? Yes, sir. Okay, where I said about continuous distribution of mass, we went for the concept of lambda. Lambda is a distribution of mass, that is, mass is distributed uniformly throughout the length. So it's mass per unit length. I told you about lambda, I told you about sigma, and I told you about rho. That is linear mass density, surface mass density, and volume mass density we consider. So if one says that lambda in the sense it's linear mass density, it's mass per unit length. When I speak about sigma as a constant, it's mass per unit area. And when I speak about the variable rho, then it's mass per unit volume. And this I've given you for distribution of mass we consider for solid uniform objects we consider. Okay, students. Now I want you to solve exercise on page number, students. If you see on page number 109, please we'll just have a look at page number 109. There are around 8 questions. Ninth one, students, it's a formula. Okay. I wanted to solve first 8 questions, students. Page number 109, students. Just try finding out the answers for that, students. A few of them are theoretical, students, and you have a few of them are derivation also. So I just wanted to get the answer for it, students.
Students, I have given you some work to work out. Okay. Page number I've given you, you have to solve those questions. The eighth one is actually a derivation, students. Before going for that derivations, we'll go for one or two more derivations. Okay, if you understand this part of the derivation for a ring and for a plate, I repeat, for a semicircular ring or a semicircular plate, students, you will be able to crack that particular eighth question. So I'm doing the work for that eighth question. 1 to 7, you should think and get the answers accordingly properly. Try to get these answers, students. Is that clear? For the eighth one, I'll be solving two derivations. I'll be explaining in them. Based on that, we'll be able to crack the eighth one. So this work, what I'm doing, the board work is actually for the eighth question to do it by yourself, but try to get it from 1 to 7 by yourself first. Yes, students, anybody of y'all have done it up to 7? Do anyone want to answer for 1 to 7, students? It's all theoretical questions, students. What is the difference between center of mass and center of gravity? Anyone? So may I? Yeah, bolo. Sir, in center of mass, the objects are weighed and divided according to their masses. On the other hand, the center of gravity is defined as the point at which the object acts in response to gravity. Okay, center of mass is a point where the entire mass of a body is supposed to be concentrated, whereas center of gravity is a point where the entire weight of a body is supposed to be concentrated and the body can be brought in equilibrium at that particular point. So students, अगर तुम ध्यान से अगर तुम्हें पता होगा, so I do feel so Smith, you had missed out the lectures in the last one. It seems you were not present. Yes, sir. Yeah, you can see, sir, students, just see the level of what do you call approach towards the subject, level of thought process towards the subject. Still, he is trying and he's throwing answers. Are you getting it? He's not making as a reason for not to attend the lectures.
But many of the students who have sat into the lectures, they are zipped, they are mum, they don't want to speak a word. Students, these things are going to harm you in later run. This is still the initial physics part of it, which you're doing it. You're almost on the 3/4 of the portion of your class 11th. And I made it very clear for center of mass, the entire mass of a body is supposed to be concentrated. And that he said it that we can distribute for objects, we can go for masses of different objects and get the corresponding centers accordingly. Whereas if in case if I happen to go for what do you call center of gravity, कहाँ पे the entire weight is concentrated. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है center of gravity के लिए मैं बोला था algebraic sum of total force या algebraic sum of torque. Students, if you remember it, I made it very clear. If I say algebraic sum of net force acting on the body is equal to 0, algebraic sum of net torque acting on the body is equal to 0, body is said to be in equilibrium. यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा और यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, जहाँ पे पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। Please students try to understand the entire weight is said to be concentrated over here. That's how we can put forward. And one more point I made it very clear, of course, in either case of it, of course, it's shift towards the heavier mass. But if in case if I compare, center of gravity shifts towards the heavier mass we consider in that case. And do they lie inside or outside the body? Yes, they can lie inside as well as outside the body also, students. सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए हमने, ध्यान से सुनना, हमने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से सपोर्ट लिया था। Students, we found out the position of center of mass. I repeat, we found out R, COM. What does R stands for? Position vector. If I give you a symmetrical body, then we found out the position vector of center of mass for that particular rigid symmetrical object. So to get this, we found out XCOM, YCOM and ZCOM. और सारे केस में हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया था? एल्जेब्रिक सम। अभी यहाँ पे भी दो कंडीशंस आता है, एक एल्जेब्रिक सम में आएगा और एक इंटीग्रेशन में आएगा। अगर मुझे RCOM चाहिए तो I can find out for algebraic sum with respect to x axis, y axis and z axis. या integration of mass of the particle, distribution of mass along x, along y, along z. लेकिन ये integration किसके लिए होगा? When the masses are distributed in continuous manner, and over here when the masses are distributed in discrete manner, students. ये है position of center of mass के हिसाब से तुम्हें जाना है. We can look at the center of mass with respect to the concept of area also. We can find out the center of mass with respect to area also, which I'm going to put forward later on. Like, this is a point of difference where a student should know at what exactly center of mass and center of gravity. How to get center of gravity, I didn't tell you that, because that is not there at present in the scope. लेकिन अगर कोई पूछे सर center of gravity आप कैसे निकालोगे? Students ध्यान से सुना, center of gravity कैसे निकालोगे? अगर सपोज मैंने कोई irregular lamina दे दिया, students irregular lamina दे दिया, ऐसा वाला lamina दे दिया मैंने, इसका center of gravity निकालना है. The student's center of gravity is due to the weight and not due to the mass. अगर मुझे इसका center of gravity locate करना है, तो students I'll go for क्या लिखा मैंने? Plumb line method. Plumb line method of equilibrium. I'm going to use that. मैं plumb line method of equilibrium use करूंगा to get center of gravity. अब ये है क्या? Students, ये जो irregular lamina दिया ना, मैंने इसके 3 points में लूंगा. Students, I'll try to go for any 3 points. Let us consider this as point 1, point 2, and point 3. How do you get the center of gravity, students? How to locate the center of gravity? Center of mass is center of gravity. तो students, मैं क्या करूंगा मालूम है?
I'll take a white paper. Students think as if this is a white paper, a drawing white paper. फिर ये ऑब्जेक्ट में लूंगा जहां पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा पिनुल करूंगा एंड आई ड्राइव अ नेल इनटू इट, और वो नेल उस वुडन प्लैंक के ऊपर जो व्हाइट पेपर लगा हुआ है उसको मैं फिक्स कर दूंगा एंड आई ट्राई टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओवर हियर विद दिस पार्ट. दैट मींस कैन आई से ये पूरा ऑब्जेक्ट सस्पेंड हो रहा है onto the white paper. This is the white paper we consider, and this is the nail which I have driven into it. Yani agar suppose if I push it, can I say this object is going to oscillate? This object is going to oscillate. जहां पे ये सस्पेंड ऑसिलेट होकर रेस्ट पे होगा स्टूडेंट्स, वो क्या बन जाएगा मेरा प्लम लाइन मेथड. यानी व्हाट आई डू, यू नो, I'll take a thread. Students, plumb line method, I'll take a thread, and to this particular thread, students, I'm going to connect a heavy mass. I'm going to connect a heavy mass, a huge heavy mass, and this is a thread. और फिर वो थ्रेड का एक एंड को मैं पकड़ूंगा और वो एक एंड को कहां पे रखूंगा, नेल के यहाँ पे स्टूडेंट्स, और वो थ्रेड को पूरा सस्पेंड करूंगा. I'm going to suspend this particular thread, and now that thread will rest. Suppose the thread is resting in this manner and the heavy mass is over here. I'm going to draw a dotted line on the white sheet. Students, that dotted line or that dotted line which you see it on the lamina part of it, that becomes the axis of symmetry. Are you getting, students? ये जो plumb line है ये कहाँ पे use होता है students? Constructions में use होता है. अगर तुम कोई भी suppose if any of the people have seen the construction sites जहाँ पे constructions होते हैं, buildings बनते हैं या rooms form होते हैं, तो उनकी जो side walls, अभी now see over here, this is a side wall. This is entire side wall onto which the board has been fixed. If you see the side wall is plain, exactly straight. So how do these workers do? They take a plumb line, students. एक टॉप के ऊपर बैठता है और वहां से प्लम लाइन लेता है और वो सस्पेंड कर देता है, तो थ्रेड पूरा सीधा जाएगा. द गैप बिटवीन द थ्रेड एंड द वॉल शुड बी नॉट एट ऑल, इट शुड टच द वॉल. दैट शोज दैट द लेवल इज मेंटेन्ड. एग्जैक्टली दिस इज अ प्लम लाइन मेथड. फिर मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर सेकंड पोजीशन. फिर आई गो फॉर द सेकंड पोजीशन और फिर मैं नील को ड्राइव करके, नील के अंदर ड्राइव करके आई विल सस्पेंड इट ओवर हियर. So yani, if I happen to go for this is my first position, this is my second position, this is my third position, so can I say with respect to first position, this becomes my axis. Second position के लिए this becomes my axis. Third position के लिए ये मेरा axis होगा. Are you getting, students? If I suspend this body on a white sheet and the background is white, and if I happen to oscillate at different points, considering a nail driven at point 1, point 2, point 3, suspending a thread with a heavy mass, I can have three axes. And wherever the three axes meets, that becomes the center of gravity of that particular body. For asymmetrical body, yes, this is the method to find out. लेकिन वही अगर symmetrical object होता, friends, वही अगर symmetrical object होता, suppose अगर मैंने square lamina लिया होता, all sides are same, all sides are laid, and the lamina is uniform. Lamina is uniform. Uniform का मतलब mass is uniformly distributed. तो उसका इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जहां पे उसका पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है. वो कौन सा पॉइंट होगा? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल. लेकिन इसका मैं सेंटर ऑफ मास में पूछूं तो वो भी कौन सा होगा? सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ अ बॉडी सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. स्टूडेंट्स, अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट करना है तो उसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, समझने के लिए क्या करूंगा? यही जो स्क्वायर लैमिना है ना, ये जो स्क्वायर रेगुलर लैमिना है, आई एम ट्राइंग टू कीप इट हॉरिजॉन्टली. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इट्स अ स्क्वायर लैमिना, it's a square lamina, and this is the point of intersection of the diagonal. I'm trying to keep this particular square lamina on my tip of my finger. अगर वो square lamina balance होता है मेरे finger पे या on a given knife edge, on the given knife edge, then you can say yes, the entire system is in equilibrium क्योंकि mass uniformly distributed है. अगर बाई चांस तुम्हारा नाइफ एज राइट हैंड साइड पे आता है, सपोज अगर तुम्हारा नाइफ एज इस तरफ आता है, तो यहाँ का मास बढ़ जाएगा, तो ये रोटेट करना शुरू करेगा,
एंटी क्लॉकवाइज में। अगर सपोज तुम्हारा नाइफ एज इस तरफ आ जाता है तो द एंटायर हॉरिजॉन्टल लैमिना जो होगा, मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया तो वो क्लॉकवाइज में जाना शुरू करेगा, तो कहने से इट्स गोइंग टू ऑसिलेट, इट्स गोइंग टू ऑसिलेट। तो कहां पे तुम रखोगे नाइफ एज? एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल वेयर द एंटायर वेट इज सपोज्ड टू बी concentrated. So what have you maintained? What have you maintained? Algebraic sum or total moment of force about that point is equal to 0. इसका मतलब बॉडी ना ही एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है ना ही क्लॉकवाइज में रोटेट होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, तो वो कौन सा पॉइंट बन जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर मैंने उसका सेंटर ऑफ मास पूछा तो instantly will be answered. Nishant was answering in the last lecture quite often. वो क्या करेगा सर, सेंटर ऑफ मास आपने पूछा ना तो ये लैमिना को हम एक्स वाई प्लेन पे ले लेते हैं, क्योंकि आपने बोला यार लैमिना है ना, लैमिना का मतलब क्या? प्लेन सरफेस। तो मैं इसको एक्स वाई प्लेन पे ले सकता हूँ, वाई जेड प्लेन में भी ले सकता हूँ, जेड एक्स प्लेन में भी ले सकता हूँ, तो मैंने एक्स वाई प्लेन में ले दिया इसको। ये मेरा 0,0 हो गया, ये मेरा एल है, ये मेरा एल है, ये मेरा एल है, ये मेरा एल है। Friends, are you getting this clear between the 2 points, center of gravity and center of mass? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please do understand between very clearly what exactly difference between, हाँ लेकिन दोनों केस में ये ध्यान में रखना, it can lie inside, it can lie outside the matter, ये ध्यान में रखना। अगर suppose मैंने boomerang दिया होता, friends, boomerang which I gave you an example in the last lecture also, ऐसे boomerang मैंने दिया होगा, boomerang शायद एक ऑब्जेक्ट है जिसको तुम हवा में फेंकोगे तो पूरा घूम के वापस तुम्हारे पास में आता है, वुडन ऑब्जेक्ट है। तो बूमरैंग का अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना तो ऐसे में सस्पेंड करूंगा स्टूडेंट्स। मैंने इसको एक पॉइंट पे यहाँ पे नेल के अंदर ड्राइव किया, फिर सेकंड पॉइंट पे ड्राइव करूंगा, फिर थर्ड पॉइंट पे, तो तीनों का एक्सिस देखो, डज द एक्सिस लाई इनसाइड द मैटर, कैन लाई आउटसाइड, इट्स लाइंग आउटसाइड द मैटर। So center of gravity can lie inside or can lie outside the matter, students. So please, a student should know the clear distinction between the center of mass and center of gravity very clearly, students. I got the answer to the second one. Second one, the center of mass of a rigid body always lies inside the body. Is the statement true or false? Yes, students, is the center of mass lying always inside the body? So it's false. False. It can lie outside the Yes, body sir. also. Okay, fine. The next one, students. The center of mass always lies on the axis of symmetry if it exists. Okay, the center of mass always lies on the axis if it exists. Is this statement true or false? Yes, students, can you answer for this? The center of mass always lies on the axis of symmetry if it exists. Is this statement true or false? Yes, anybody, students?
Yes, anyone? Smith, can you answer? Nishant, So false. Ashmita, why false? Center of mass always lies on the axis of symmetry if it exists. Students, axis of symmetry, is it so? Is a line always considered for symmetrical objects, or the axis of symmetry can be considered for asymmetrical objects also? Students, what exactly is symmetry? Students, what exactly is symmetry? Symmetry we consider is what? Identical. Two halves equally placed on either side. Friends, अभी मैंने irregular shaped lamina दिया था. So by plumb line method, didn't I get the axis of symmetry, students? हाँ या ना? Where the mass was distributed accordingly and the body was in equilibrium. जब भी मैंने students एक simple concept ले लो. अगर suppose मैंने वो body लिया था और मैंने उसको oscillate किया था, students. मैंने अगर इसको oscillate करता हूँ, students, oscillate करूंगा, तो एक equilibrium में rest हो जाएगा. और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं oscillate और वो ऐसे rest हो रहा है, now if you see you might come across कि सर यहाँ का मास आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ का मास आपको कम दिख रहा है, फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है, हिल नहीं रहा है ना, हिल नहीं रहा है, ना ही वो क्लॉकवाइज जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द मास यूनिफॉर्मली on either side of it. So I can consider this as my axis of symmetry for asymmetrical body also. But now if I want to look at the center of mass, does the center of mass always lies on the axis of symmetry? Students, the center of mass not necessarily Center will of lie on the axis of symmetry for gravity. asymmetry. It will always lies on the axis of symmetry for always what kind of object? Symmetrical objects. That's why the given statement is considered to be false. What Asmisha said is absolutely correct. Students, क्या ये clear हुआ? If I happen to give you a symmetrical object, students, then in that case, of course, my axis of symmetry will be what? Will divide the portion into equal halves. And students, when exactly the center of mass will lie? Now look over here. I've given the heading. Center of mass of a uniform semicircular ring. Where exactly it is? It is at a height of h is equal to 2r/5. लेकिन बाद में मैंने क्या लिखा है? From its center on the axis of symmetry. यानी अगर मैं सेमी सर्कुलर रिंग लेता हूं, तो सपोज इसको मैं डिवाइड करता हूं into two parts. If I keep my hand over here, do you see there is equal mass distributed on left hand side and equal mass distributed on right hand side? Yes. And this becomes my axis of symmetry. Is the body is a symmetrical object? Yes. It was initially a thin wire. पहले तो ये वायर था जिसका लेंथ L था. फिर इसी वायर को मैंने सेमी सर्कल में बेंड कर दिया. इसी वायर को मैंने सेमी सर्कुलर, जो लेंथ अभी क्या बन गया मेरा? पायर बन गया मेरा. And it is uniformly distribution. यानी students, in order to have on the axis, very important is the body should be symmetrical as well as uniform distribution. अगर सपोज मैंने कोई लैमिना लिया, स्टूडेंट्स, अगर मैंने लैमिना लिया जहां पे थिकनेस ज्यादा है, कहां पे थिकनेस ज्यादा है और कहां पे थिकनेस कम हुआ, तो नॉन यूनिफॉर्म लैमिना हुआ. For uniform symmetrical objects itself, it will lie on the axis of symmetry. Is this part clear to all of you all? Friends, is it clear? Yes, sir. Yes. So what Nirik, about the Yes. center of gravity? pardon? We are Center of speaking about center gravity. of mass.
We're speaking about center of mass. Center of gravity always will play the same thing. Center of gravity is always where the entire weight of the body is supposed to be distributed. And that will also be along the same symmetrical part itself only. But uniform distribution होना चाहिए. और uniform distribution किस लिए होगा ना मालूम है? For symmetrical objects होगा. Asymmetrical objects के लिए जरूरी नहीं है कि the mass will be uniformly distributed. Okay, next one. If all the particles lie in YZ plane, students, if all the particles lie in YZ plane, the x coordinate of the center of mass will be 0. Is this statement true or false? सारे particles YZ plane में हैं, so exactly the x symmetrical of all the particles will be. So 0, true. True. Why is it so? Why is it so? There is no mass along the x-axis. There is no mass along the x-axis. If I happen to give you, it's a simple concept. ये x-axis, ये y-axis, और ये z-axis. Now suppose अगर मैंने कोई rectangular lamina लिया और उस rectangular lamina को मैंने ऐसा fix किया. Students, I'm fixing it in this manner. So where exactly I'm fixing it? I'm fixing it along which axis? I'm fixing along y and z. And x is perpendicular. X-axis is perpendicular to plane of lamina. As if the lamina is along YZ. And the x-axis is perpendicular to it. Where is the entire mass is distributed? The entire mass is distributed on which plane? YZ plane. Is there, do you see any particles or any masses distributed along the x-axis? No. Are you getting it? So जहां पे तुम्हारा distribution of mass होगा वही तुम लोग हैं. There is no mass distributed along the x-axis, so the given statement is true. If all the particles of the system lies on YZ plane, then the x coordinate of center of mass will be certainly equal to 0 because you don't see any particles distributed along x-axis. So the given statement is true. Fifth one. What can be said about the center of mass of a solid hemisphere of radius r without making any calculations? Will its distance from the center be more than r by 2 or less than r by 2? Without doing any mathematical calculations, where exactly the center of mass will be? So Will less it than be? r by 2. Absolutely correct, less than r by 2. Why less than r by 2? So its center of mass will be at r2 from the center of the base circle. Since the given hemisphere can be made by carving out masses from the upper part, the center of mass of the remaining hemisphere will be less than r2. Okay, absolutely correct. Students, इन्होंने क्या बोला मालूम है? What can be said about center of mass of a solid hemisphere? Students, है solid hemisphere है. Solid hemisphere, hollow नहीं है. Students, अभी ध्यान से सुनना. अगर मैं दो डायग्राम तुम्हें बना के देता हूँ, ये तुम्हारा एक पूरा स्फीयर है. Students, ये पूरा स्फीयर है. This is the entire sphere I can consider because it's three-dimensional. एक entire sphere है. अगर मैंने hemisphere लिया है, तो ये एक hemisphere I can consider. I can consider hemisphere over here also. अगर suppose मैंने एक hemisphere को मैंने hollow ले लिया, suppose अगर इसको मैं hollow लेता हूँ, students, if I'm taking this as hollow, are you getting it? And this I'll consider as a solid. Hollow लिया उसका मतलब क्या होगा? Will you see any matter over here? ये मैटर है ही नहीं, ये सेंटर है, लेकिन यहाँ पे मैटर नहीं है. हॉलो, फॉर एग्जांपल हैव यू सीन दोस कोकोनट नारियल का, ओके, द ब्राउन कलर का नारियल, अगर उसको परफेक्ट आधा निकाल दिया तो एक हेमिस्फीयर मिलेगा. लेकिन यहाँ पे पूरा माउथ उसका ओपन है, अंदर भी पूरा ओपन है, लेकिन पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे है?
Students, वो नारियल का मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है? along the circumference, along the surface area, बाउंड्रीज के ऊपर ज्यादा है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये सॉलिड है ना। इफ यू सी सॉलिड, वेर एग्जैक्टली यू सी मोर मास डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट, तुम इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है, बट जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ आओगे, सी द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर। एंड स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास। यानी अगर मैंने हॉलो लिया और अगर मैंने सॉलिड लिया, दोनों हेमिस्फीयर है, दोनों का अगर मैंने रेडियस आर ले लिया, दोनों का मैंने रेडियस आर ले लिया और ये इसका सिमेट्री हुआ, तो ऑफ कोर्स इट्स अ यूनिफॉर्म शिफ्ट, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, ये देखो ये पॉइंट होगा r/2, ये r है तो ये r/2 होगा मिड पॉइंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास विल बी टूवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी यहाँ पे तुम्हारा सेंटर ऑफ मास विल बी ग्रेटर देन r/2, ऊपर की तरफ ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ये देखो, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है r/2 का। लेकिन इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, if you try to observe in this case, try to observe in this case, where exactly you see more mass is distributed towards the base, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा लेस देन r/2। व्हाट इज द आंसर फॉर सॉलिड? लेस देन। लेकिन वही अगर क्वेश्चन हॉलो के लिए होता तो ग्रेटर देन r/2। So the answer for this will be less than r/2, where the distribution of mass is more at the base. Is this clear, students? So is it clear? And the mass is uniformly distributed throughout the volume. तो यहाँ पे अगर सपोज मुझे जाना है distribution of mass, students, तो should I go for lambda, linear mass density? Should I go for surface mass density? Or should I go for volume? This is volume mass density, rho. That is mass per unit volume. If I happen to go for infinitesimal mass, correspondingly the volume will be infinitesimal. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ total mass of the hemisphere is m, are you getting it? So what exactly I'll consider will be, its volume will be equal to what? Volume of a hemisphere will be what? 2/3 pi r cube. What is volume of the entire hemisphere? For sphere 4/3 pi r cube. Hemisphere होगा तो इसका आधा, so divide by 2, so 2/3 pi r cube. Volume is always 3 dimensions. Sigma is mass per unit area. ये ध्यान में रखना, ये 2 dimension होगा. Agreed? The unit is kilogram meter square inverse, kilogram meter cube inverse, kilogram per meter. This is mass per unit length, dm by dl. This is what we consider is distribution of mass, students. Okay, the next one. All the particles of a body are situated at a distance r from the origin. The distance of the center of mass of the body from the origin is also r. Since all the particles of a body are situated at a distance r from the origin, the distance of the center of mass of the body from the origin is also r. Is the statement true or false? All the particles of a body are situated at a distance r from the origin. Yes.
Yes, anybody, students? Yes, Nishant, Smith, can you answer? Ashmita? All the particles of a body are situated at a distance r from origin. The distance of center of mass of the body from the origin is also r. Yes, students. Students, अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो क्या था? उन्होंने क्या बोला? All the particles of a body are situated at a distance r from origin. Particles are distributed at distance r from origin. Students, now see, if in case if I happen to go for point O, okay, now a person will try to show particles. ये डायग्राम हो सकता है. उन्होंने नहीं बोला कि it's surrounded by all. दूसरा डायग्राम ये हो सकता है. Please pay attention, students. Continuous distribution. ये discrete manner में, ये continuous manner में. कैसे तरह n number of particles? ये तो मैंने एक simple circle दिया, students. I can't go for this as a diagram. Are all these particles are equidistant from this? Are the locus of all points? Students? Are the locus क्या ये सारे congruent sides है? Students? No. यानी मुझे circular object ही लेना पड़ेगा. यानी मुझे locus of points. Students, the first point speaks about what? All the particles of a body are situated at a distance r from origin. तो अगर मैं इसको origin लेता हूँ, इसको मैं origin लेता हूँ, तो कहने से these are all locus of points which are equidistant from a given point. Yes, sir. हाँ, अभी ये मैंने पूरा circle है, ये भी circle लिया. I can show it in this manner also. सभी circle, either half और ये मेरा point O. I can show it a continuous one or a kind of a wire point O. मुझे बताओ students, where is the center of mass for these two objects? Students, where is the center of mass of these two objects? अभी हम लोग ने पढ़ा है. अगर मैंने hollow लिया, distribution of mass circumference पे है, hollow लिया, तो कहने से it will be at a distance greater than r by 2. Is it equal to r? Students, ये तुम्हारा r हुआ, ये तुम्हारा r by 2 है. Center of mass कहाँ चला गया? Students, यहाँ पे होगा ना? हाँ या ना? Yes, sir. Greater than r by 2. हाँ, तो फिर यहाँ पे is it equal to r? No, not at all. If I want to go for center of mass for this particular one, so what exactly I'll consider? Where exactly center of mass I'll consider will be? इसका center of mass for discrete particles, what exactly I'll consider will be? Students? So if I want to locate it, students, now see, अगर suppose मैं इसको coordinate axis पे भी लेता हूँ, तो इसके coordinates क्या हो गए? ये m1 में लूंगा इसको, mass सबका same ही रहेगा. ये मेरा 0,0 होगा. ये देखो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, x6 y6. Can I take it? Students, can I take it?
हाँ या ना? डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, Yes, sir. सबका मास सेम है, तो मुझे बताओ कि will I get the center of mass along the circum will be equal to r? हाँ स्टूडेंट्स, will be equal to r? If I happen to go for this part of it, ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, कंसिडर ये होगा। अगर सपोज मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हो भैया। ये पार्ट लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हो भैया। ज्योमेट्रिकल अगर इन दोनों का मैं सेंटर ऑफ मास लूंगा तो समवेयर आई एम गोइंग टू गेट इन द होलो स्पेस, विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू r? हाँ स्टूडेंट्स, नहीं ना? और मैंने कैसे निकाला स्टूडेंट्स? मैंने कैसे निकाला? वापस में बोल रहा हूँ, कैसे निकाला मैंने स्टूडेंट्स? ये सारे पार्टिकल्स कैसे थे? डिस्क्रीट मैनर में है ना। तो देखो, ये पार्टिकल लिया, ये दूसरा पार्टिकल लिया, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, मैंने ऐसे लिया मैंने। तो इसको मैंने क्या अज्यूम कर दिया, चलो डाल देते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, सबका मास तो सेम होना चाहिए। इसका सेंटर यानी मेरे को कितना दिया, आई पुट देम इनटू एक्स वाई प्लेन, जस्ट फाइंड आउट दैट एक्स यू एम एंड वाई सी एम। कैन यू फाइंड आउट दिस? हाँ सर इजी है, ये m है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ये होगा यहाँ पे x1 y1 मासेस m, ये क्या होगा x2 y2 मासेस m, ये क्या होगा x3 y3 मासेस m, और ये ऑन इट। स्टूडेंट्स, बट विल यू गेट द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r? हाँ स्टूडेंट्स, No, sir. नॉट एट ऑल। If I happen to go for the entire, where is the center of mass is at origin? Students, at origin where r is equal to 0. Discrete manner, continuous manner में अगर मैं तो very exactly center of mass, because the entire mass of a body is supposed to be concentrated at point O. So can I say I'm getting different possibilities? I'm not getting equal to r. So is this statement true or false? Sixth one. False. False. It'll be considered to be less than or equal to r. I can consider less than. We considered or at the center. I can consider. The entire mass. Is this clear to all of you students? Yes, sir. So is it clear? Fine. So the next question, seventh one. Can you get an answer for the seventh one? Three particles of masses are given to you and they are placed at ABC, corners ABC respectively of an equilateral triangle of side 1 meter, students. Okay, this is a problem, students. Okay, find the distance of the center of mass from A. Find the distance of center of mass from A. Yes, anyone who can answer? Swapnil, Smith, Pratham, Purvi, Nishant, Alicia, Swapnil, can you answer? Mayank, can you answer? Three particles of mass 1, 2, 3 kilograms are placed at corners ABC respectively of an equilateral triangle. It's an equilateral triangle, students. All sides are equal, students. 1, 1, 1 they have given to you. And I wanted from A. Since I want to find the distance of the center of mass from A. So let us consider point A to be at origin. Students, जहाँ से मेरे को पूछा गया है तो मैं A को कहाँ पे लूँगा मैं? I've taken at 0,0 along XY plane, students. So मैंने A को यहाँ पे ले लिया है, B को यहाँ पे ले लिया, C को यहाँ पे ले लिया.
Now can you get an answer? ये तुम्हारा x1 y1 हो जाएगा. Okay, 3 particles, ये 1 kilogram है. M1 is equal to 1 kilogram. Let me take B as M2, which is equal to 2 kilogram. And let me take C as M3, which is equal to 3 kilograms. Students, you can draw this diagram accordingly and get the answer. Hope that you're getting it. ये तुम्हारा x2 y2 यहाँ पे क्या होगा coordinate, that you should know it. और यहाँ पे x3 y3 क्या होगा? मुझे चाहिए center of mass from point A, students. Sir, my answer is coming under root 19 by 6. You found out the magnitude of what? Under root 19 by 6. पूरा 19 by 6 आ रहा है Swal? Yes, sir. Students, just cross check Tell the it. distance of it. Yes, sir. So same answer. Even I Okay, fine. You found out the distance. You found out the distance. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. XUM 7 by 2. Yes, sir. So distance पूछा है ना, तो you have to find out the magnitude. IJ में मिलेगा, फिर उसको तुम्हें square करना है. Agreed? Yes, Students, sir. अगर हाँ यार, ये तुम्हारा x1 y1 है. मुझे बताओ इसके coordinates क्या होंगे students? x2 y2 के coordinates क्या होंगे? Those students who are not able to get it, please pay attention. ये तुम्हारा vertical axis हुआ students. तो ये equilateral triangle है, से ये 60 है students, ये 60 है और ये 60 है. Exactly identical question I had given it in the last lecture. Nishant, you also had done it. Equilateral triangle में तुमने cos के component निकाले थे. फिर मैंने बोला था side opposite to 60 degrees root 3 upon 2 times the hypotenuse. So side opposite to 60 degree hypotenuse is 1. So root 3 upon 2, तो ये root 3 by 2 हो जाएगा. और ये half the hypotenuse हो जाएगा. तो इसके coordinates क्या होंगे? What exactly the x coordinate we consider is? Half comma 3 by 2. Half. Root 3 by 2. Comma root 3 by 2. और मास कितना है इसका? 2 kilograms. इसका क्या है स्टूडेंट्स? x3 ये पूरा 1 दिया है. 1 comma 0. Yes, it's 1 comma 0. Now students, can I find out XCOM? तो formula क्या होगा? M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3. Please, those students who are not getting it, for them I am writing it. Students, I'm not doing it for Nishant or Smith or these people. The rest of them, please think properly and get the answer. Maybe there are certain students who are getting it, but they are not answering. But the rest of them, how to get it, or ऐसे questions पूछेंगे students. Don't lose marks for these kind of questions. M1, M2 plus M3. इसका आंसर क्या आ रहा था तुम्हें? XUM क्या आ रहा था? So 4 by 6. 4 by 6. 6. 4 by 6, so 2 by 3. Yes, sir. So I took it as 4 by 3 because the YCOM is root 3 by 6. No, 4 by 3, 4 by 3 or 4 by 6 it is? 4 by 6. 4 by 6. Yes. और YCM क्या है? Root 3 by 6. Okay, root 3 by 6. और ये 4 by 6, ये I cap होगा और ये J cap होगा. इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला होगा तुम्हारा M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 अपॉन M1 plus M2 plus M3. ये तुम्हारा YCM हो जाएगा. यानी तुम्हारा पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ना यहाँ से, ये तुम्हारा RCUM क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में XUM, YCUM होगा. यानी ये तुम्हारा RCUM क्या होगा? Will be into bracket 4 by 6 I cap, root 3 by 6 J cap. लेकिन तुम्हें डिस्टेंस पूछा है, तो मुझे मैग्नीट्यूड पूछा है स्टूडेंट्स, तो वो होगा अंडर रूट 4 by 6 the whole square plus root 3 by 6 the whole square. And that answer is 19, root 19 by 6. Are you getting this answer? Root 19 by 6? 16 plus 3, 19. Yes, sir. Yes. Students. Okay. क्या मैं इसको erase कर दूं स्टूडेंट्स? Friends, can I erase it? Yes, sir. Now, students, to get the 8th one, first we'll go for this part of it.
So we'll find out center of mass of a thin uniform semicircular ring, students, and it is at a height of 2r/5 from its center and lying on the axis where r is the radius. स्टूडेंट्स ये मैंने थिन सेमीसर्कुलर रिंग दिया, यानी एक थिन वायर है। स्टूडेंट्स ये सोचो कि ये वायर था, इसी वायर को मैंने बेंड करके रिंग में कर दिया। यानी अगर मेरा ये वायर ए बी है और ये पॉइंट था ओ, तो मेरा पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट बी यहाँ पे आ जाएगा, ये तुम्हारा एक्सिस हुआ, ये भी तुम्हारा एक्सिस हुआ। Getting it? In this case, this is what your axis of symmetry I'll consider. Divides it into two equal halves. This won't be your axis. ये तुम्हारा axis हो जाएगा. It divides it into two equal parts. We consider. And point O जो यहाँ पे, वो point में O यहाँ पे ले सकता हूँ. अब ये जो semicircular ring है, उसका center I'm taking it as point O now. I want to find out students center of mass for this particular ring. So what did I do, students? मुझे बताओ, ये पूरा hollow space है, एक simple ring है, यानी पूरा mass is distributed where along the circumference. तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट ले लिया, यानी इसी रिंग का एक छोटा सा मास ले लिया स्टूडेंट्स। लेट अस से दैट द एंटायर मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर इज इक्वल टू व्हाट? सो द लेंथ ऑफ द वायर इज पाई इनटू r। 2 पाई होता तो पूरा सर्कल हो जाता, ये सेमी सर्कल है तो पाई होगा, डायमीटर तो ले नहीं रहे हम लोग, ठीक है, हम बेंडिंग इन फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। तो व्हाट एक्जेक्टली मास पर यूनिट लेंथ इज सिंपली कॉल्ड एज लैम्डा, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर मैंने पूरे वायर का लिया तो टोटल वायर का मास कैपिटल है स्टूडेंट्स, उसका लेंथ क्या होगा पाई r। अगर मैं इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट लेता हूँ तो स्टूडेंट्स इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट का लेंथ में क्या ले रहा हूँ, सो लेंथ आई एम टेकिंग इट इक्वल टू dx। एग्री स्टूडेंट्स? उसका मास में क्या ले रहा हूँ, उसका मास में क्या ले रहा हूँ, सो उसका इनफाइनाइटेसिमल मास विल बी dm। तो मास में dm ले रहा हूँ, लेंथ में dx ले रहा हूँ, so what exactly my lambda dm by dx, and students this ratio remains constant। अगर ये छोटे छोटे मास का भी मैं वैल्यू निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू m अपॉन पाई r। क्या ये पार्ट क्लियर होगा? लीनियर मास डेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, linear distribution of mass throughout the ring is constant. So if I go for capital M upon pi r and dm by dx, the ratio all the time remains constant, and that constant we call linear mass density, that is lambda. Now ये जो एलिमेंट है, ये लेंथ बहुत छोटा है स्टूडेंट्स। तो if I try to show the position vectors r on either side and if I make them to meet at point O, can I say this particular element subtends a very small angle at the center? So can I call d theta as very small angle, and that is infinitesimal angle? How do we relate this angle with length of r? So everyone knows it. So theta is defined as length of arc upon unit radius. ये सबको पता है, मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा तुम लोगों ने। थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ पे क्या होगा, so therefore d theta लेंथ ऑफ आर्क तो मेरा dx है अपॉन रेडियस, तो r आ गया। Agreed? Can I resolve this particular? See, this is the radius I'm getting it. Can I resolve this r into two components? It forms an angle theta with the horizontal. तो ये क्या होगा मेरा r cos theta, ये क्या हो जाएगा r sin theta। Agreed? यानी अगर मैं सपोज ये एलिमेंट लेता हूँ, जो एलिमेंट का लेंथ बहुत छोटा है, तो कैन यू टेल मी इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो ये जो एलिमेंट मैंने लिया है जिसका लेंथ dx है, मास dm है और ये रेडियस r है, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स में ले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो एलिमेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर उसका सिंबल होगा r cos थीटा, कॉमा r sin theta. So did you get the value of x and y?
Since really give the value of x and y, क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Everyone, मैंने क्या किया, r को resolve किया दो components में, horizontal r cos किया, vertical r sin किया, और तुम बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, d थीटा तो एंगल है ना वहाँ पे, लेकिन my dear students d theta is very small, d theta is very small, ये जो element है ना वो बहुत ही छोटा है, length, it can be, I can take the length in terms of millimeter or micrometer also, of the order 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵, तभी जाके हम इसको infinitesimal length बोलते हैं, infinitesimal mass बोलते हैं, corresponding length is infinitesimal. So now we have got the two coordinates of d theta is equal to, so to see the variables, linear mass density is m upon pi r, dm by dx, d theta is dx by r. For the element, we have the two coordinates r cos theta and r sin theta. Now, if I want to find out the value of lambda, what exactly lambda I can write down now? And look over here, lambda is equal to what? So lambda can be written in terms of m by r, agreed? M by pi r is equal to dm is the mass. Since can I run on dx is what? R into d theta. What is dx? R into d theta. Using the formula theta is length of arc upon unit radius. What I need to find out? I need to find out center of mass. So to get center of mass, मुझे dm को subject बनाना पड़ेगा. क्योंकि students मुझे चाहिए क्या? मुझे xum चाहिए. Students xum चाहिए. और क्या चाहिए? मुझे ycum चाहिए. Center of mass for this particular ring. Now, how is the mass distributed? Is it in discrete manner or in continuous manner? Say तो discrete manner में. Are you getting it? तो discrete manner के अंदर तुम देखोगे तो how exactly we consider? Discrete manner में how exactly we consider? So discrete manner में अगर मैं रखूंगा तो मेरा xum क्या हो जाएगा? Sorry, this is in continuous manner, not in discrete manner. मेरा continuous manner क्या होगा? Sir वो integration में आ जाएगा. What is it? xum in terms of integration क्या करोगे? xum will be equal to what we consider is, sir, it is x into dm upon integration of dm. जहां पे x क्या होगा? Starting from x is equal to 0 to x is equal to pi. If I happen to go for, look over here, students, here dx hai. If I take from here, this is my lower limit, and if I go all the way around at the other end, तो can I say यहाँ पे मेरा lower limit x is equal to 0 हो जाएगा? और अगर मैं ये element को, ध्यान से सुना, अगर मैं element को यहाँ से consider करना शुरू करूँ, तो मेरा x is equal to 0 होगा, फिर मैं बढ़ते जाऊंगा, फिर मैं वापस बढ़ते जाऊंगा, वापस where exactly I'm going to go for? X is equal to pi. तो मेरा lower limit क्या होगा? 0. Upper limit क्या हो जाएगा? Pi. Agreed, students? Is this clear? Integration of dm क्या होगा? 0 to m. Is your xum clear to all of you? Yes. Yes. Agreed. What about ycum? ycum को तुम क्या करोगे? सर ycum भी वैसे ही होगा तुम्हारा. अगर मैं ycum लूंगा students, so what exactly ycum will be? So same formula. It will be what? Integration of y into dm upon integration of dm 0 to capital M. ycum को कैसे लिखोगे तुम? सर ये भी 0 to pi होगा. लेकिन मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एक्स एक्सिस है? कहां पे भी तुम्हें मास एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, और योर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the circumference with respect to y axis as the axis of symmetry. बताओ कौन से axis of symmetry के हिसाब से तुम्हारा mass is considered to be distributed, with respect to y or with respect to x? You'll say, sir, there is no mass distributed along this x-axis. Your mass is distributed with respect to the axis which is passing through the center, perpendicular to the base. Students, मैंने जो ring लिया था, ये thin wire है, इसको मैंने bend किया था. Do you see any mass along x-axis? नहीं, ये तुम्हारा x-axis है, ये तुम्हारा y-axis है. Are you getting it? So we don't have any mass along x-axis. So what exactly xum? What exactly xum will be? Sir, my Zero. xum will be practically a big 0. यानी मेरा xum तो 0 आएगा. ycum, yes sir, ycum निकाल सकते हम लोग. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको?
Then I'll proceed further. Students, are you getting it? Yes, sir. When I try to distribute, अगर मैं R को resolve कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखो ना, तो R cos थीटा x एक्सिस पे जा रहा है, तो अभी मेरा ये R cos थीटा किसके हिसाब से होगा? x एक्सिस पे, लेकिन वहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है, तो ये तो मेरा रूल आउट हो गया, भाई मेरा सिर्फ ICM बचा. Is this clear to all of your students? Can I move Yes, further? sir, clear. Okay, fine. Now suppose अगर if I happen to go for अभी तुम्हें क्या करना है? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है. सब्स्टिट्यूशन करना है. कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तुम? क्या करोगे? बोलेंगे सर सिंपल, आपको सब्स्टिट्यूशन करना है ना, आपको YCM चाहिए ना, तो सबसे पहले DM की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. स्टूडेंट ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. I get what exactly I'm trying to consider. It's y into dm we consider in that case. Okay. तो तुम y की वैल्यू क्या है? What is the y coordinate? सर y coordinate तो आपके हाथ में है r sin थीटा. तो ये y की जगह पे तुम क्या डालोगे? r sin थीटा तो डालोगे, है ना? dm की जगह पे क्या डालोगे? लैम्बडा तो नहीं डालोगे ना? You have to go with respect to random mass. So dm को तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? स्टूडेंट्स dm को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? m into r theta upon pi r. Agreed? So now can you get the answer, students? Yes, sir. Get the answer now, students. इसको सॉल्व करो भाई. Now I'm not going to help you out. We solve करो इसी को. Get the answer by yourself. I'll just give you the substitution. YCOM will be integration of y, and that y coordinate I'll consider will be r sin theta into dm. What is dm? M into r d theta. Agreed? So there is pi r also, isn't it? Very sorry students. ये pi r भी है ना? Students, ये cancel हो जाएगा ना? देखो dm क्या लिखोगे तुम? M into r d theta upon क्या लिखोगे? dm is equal to m into upon pi r. इसके लोअर लिमिट क्या होगा? 0 to pi, the whole divided by integration of dm 0 to m. Now it's clear students? Please, मैंने y को क्या सब्स्टिट्यूट किया students? Y is r sin theta. What is dm? M into r theta upon pi r. यानी r and r will get cancelled students. Constant terms को बाहर निकाल. So now can I say what is YCOM? So what is the constant term over here? Is r constant term? Yes. Is mass of the semicircular ring constant? Yes. बचा क्या? सर पाई डिनोमिनेटर में है, क्या वो भी कांस्टेंट है? Yes. Can I remove pi also? So what exactly it is? Integration of what exactly it will be? Integration of sin theta into d theta 0 to pi divided by what is integration of dm? M upper limit minus lower limit, तो कहना चाहिए पूरा m ही आ जाएगा. Can I cancel this m and m? Yes. So now if you see over here, what exactly your YCOM? YCOM will be equal to what? R upon pi. Friends, can you tell me what is integration of sin theta into d theta? What is integration of sin theta into d theta? Come on, calculus. Differentiating sin theta is plus cos theta. Differentiating cos theta is minus sin theta. Integrating sin theta will be minus cos theta.
0 to pi. Students, integration of sine theta into theta is minus cos theta. Integration of cos theta will be plus sine theta. Now, if we solve it further, so what exactly YCM will be equal to R of ये minus हमने बाहर ले लेता हूँ minus R upon pi. Students, upper limit minus lower limit because you have definite integrals चाहिए. तो क्या होगा cos of pi minus cos of 0. Students, what is cos of pi? What is cos of pi? Minus 1. What is cos of 0? Plus 1. Minus 1. Minus 1. Minus 2. इसका आंसर -2 होगा. -2 into minus will be 2r upon pi, and that's your YC1. So now when somebody asks you, और ये formula मैं दे चुका हूँ तुम्हें. Now if somebody asks you, students, what is the center of mass of a uniform semicircular ring? Is it 2r by pi? Yes, but where? Where? It is on the y-axis. It is on the y-axis of symmetry. At a height of how much? 2r upon pi from the center. Is this clear to all of y'all? Yes. Yes, sir, clear. Okay. Can I erase the students? No, sir. 1 minute. Smith, is it clear? Nishan, clear? Smith, is it clear? Nishant, Swapnil? Yes, sir. Okay, fine. Mayank, what about you? Mayur? Yes, sir. Ashmita, you got it? Yes, sir, clear. Fine. See, one thing I'm asking those students, those who at times respond. बाकी को तो मुझे पता नहीं है करके. I don't know about the rest of them. Do speak out, students. अगर नहीं पता चले तो do speak it out. Don't just keep mum. You'll be a loser at the end of it. To be lost में, utter loss में. Doesn't matter, Nishan. ना स्टूडेंट्स, चलो मैंने ये रिंग के लिए दिया. स्टूडेंट्स, अभी तुम अपने आप निकालो प्लेट के लिए. स्टूडेंट्स, now my question changes. My question goes with center of mass of a uniform semicircular plate, not a ring or a disc. I repeat, find out center of mass of a uniform semicircular plate or disc, students. Is that clear? And the answer for this will be COM is at a height of 4r upon 3 pi. Chalo, get me the answer for this. ये जब भी तुमने समझा होगा तो वो थोड़ा बहुत it becomes easier for you to get it. Think properly. Please, thought process कैसा होना चाहिए मालूम है? अगर मैंने प्लेट दिया, ये क्या है? रिंग है. स्टूडेंट्स, मुझे बताओ ये रिंग मैंने बनाया कैसे? क्या किया था मैंने? क्या किया? तो तुम बोलोगे सर आपके हाथ में पूरा एक वायर था. प्लीज स्टूडेंट्स, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? सर आपके हाथ में एक पूरा वायर था, एक पूरा लंबा वायर था. आपने क्या किया मालूम है? ये वायर के छोटे छोटे पार्ट्स लिए dx, जिसका मास dm है. और आपने क्या किया सर? आपने dx को पॉइंट B से अलाइन करना शुरू कर दिया. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? dx को पहले यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, रखते गया, यानी मैं 0 से लेते हुए पाई तक चला गया और मेरा ये सेमी सर्कुलर रिंग बना. That is how my thought process went with respect to dm and dx, and I got the limits. Students, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे mass is distributed along the length, along the area or along the volume. और तुमने मास को कैसे अलाइन किया है? अगर कोई भी किसी ने कुछ प्रूफ पूछा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. After getting that, you should try to select how to go about with the limits.
इसको तुम कैसे अलाइन करोगे जो तुम्हें लिमिट्स एक मिलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के हिसाब से। ये दो चीज अगर तुम्हें मिल गया देन यू कैन गो फॉर स्ट्रेट अवे विद अ प्रूफ, क्योंकि तुम्हें एक्सक्यूएम का फॉर्मूला मालूम है। भाई एक्सक्यूएम का हमेशा कंटीन्यूअस में इंटीग्रेशन ऑफ x into dm upon dm। हाँ, अगर यही चीज अगर डिस्क्रीट मैनर में होता तो अलजेब्रिक सम ऑफ mi xi upon algebraic sum of mi I equal to 1 to I equal to n. So I have given you for ring, you have to get it by plate for yourself. It's not given in your books, students. Proof दिया नहीं है book में, शायद इसका proof होगा, लेकिन plate का नहीं दिया। That's why I'm asking you for plate. Can I erase this? अभी इसको erase कर दो। Yes. After getting this for a plate, अगर तुम समझ गए, then you'll be able to get it for the question number 8 of the exercise part of it. That's why I'm doing this question, students. Yes, students. Anyone?
Yes, students, anyone? Center of mass of a uniform semicircular plate or a disc at the center of mass at a height of 4r by 3 pi from its center. Okay, and on the axis of symmetry we consider where r is the radius of the disc. Now, first of all, students, will you get the center of mass? Please pay attention, students. Will you get the center of mass as along x, along y, or both? Will I get xum or ycum for this diagram? Or will I get only xum? I will get only ycum. Can you get the answer? Can you judge your answer? Students? Anybody? Center of mass for this particular plate, uniform plate. Will I get center of mass with respect to xum as well as ycum? Or will it be only xum, ycum will be 0? Or will it be only ycum and xum will be 0? Give reason for your answer. Anyone? Please, students, you need to answer. You need to think about it. Otherwise, you are lost. Students, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा मालूम है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा तुम्हें पता है? क्वेश्चन तुम्हारा एक था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब एक्सरसाइज में. If a particle of a system lies in YZ plane, since the particle system lies in YZ plane, then the x coordinate of the center of mass will be 0. It's a thin uniform plate, students. Thickness negligible. यानी स्टूडेंट्स ध्यान से सुना स्टूडेंट्स अगर मैंने इसको ये लिया स्टूडेंट्स ध्यान टू अंडरस्टैंड दिस. Suppose if I happen to go for this as my x plane, I get it, and this is my y plane. Please students try to understand this. This is my x, agreed, and this is my y. Where do you see the thin plate? Students, center of mass of it's a thin uniform plate. Thin uniform plate का मतलब the plate is in form of a paper. Thickness negligible. ये जो मैंने dx लिखा है ना वो thickness है, negligible है. तो मेरे पेपर को कैसे रखा है स्टूडेंट्स? ये पूरा मेरा पेपर कहाँ पे है? y axis पे है ना. Do you see any mass distributed along the x axis? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? ये पूरा जो मेरा सेमी सर्कुलर प्लेट है वो कौन सा है? इट्स अ थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट जिसका थिकनेस is a thickness of a sheet. Don't you think so? I've taken 2 vertical sheets. मैंने कैसे ड्रॉ किया था? सोचो ये एक पेपर मैंने लिया है, इसको हॉरिजॉन्टल रखा है, दूसरा पेपर मैंने वर्टिकल रखा है. फ्रेंड्स ये पेपर का थिकनेस इज एक्चुअली द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमी सर्कुलर लाइन. लेकिन वो मेटल पार्ट है. ये सोचो ना मेटल है, थिन शीट है. So do you see the mass distributed along x axis? Sir, there is no mass. यहाँ पे no mass, no mass, no mass, no mass, no mass. Its a thickness is negligible. Mass is distributed along which plane? So it's particle on the vertical. It's in vertical, that is along y. क्या ये part clear हुआ students? Students यहाँ का xum will be 0. ycum आंसर वो निकलेगा. And let us continue this distribution of mass students. तो ycum को कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ y into dm. अभी यहाँ पे तुम्हें लिमिट्स चाहिए, वो तुम निकालोगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, जिसको मैं कैपिटल M लिख लेता हूँ मैं. फाइंड आउट ycum स्टूडेंट्स. इज दिस मच क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, क्या इतना क्लियर हुआ है?
Yes, sir. Students, the rest of them, are you all getting it? Yes, sir. Okay, what about you, Smith, Prashant, Mayank? Yes, sir. Okay, please get me the answer now. YCM का आंसर लेके आओ. सर तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा करना मालूम है स्टूडेंट्स? ये देखो, सबसे पहले हमने जो पहला वाला मैंने केस किया था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टू फिगर आउट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि दिस टाइम दिस थिंग्स आर आफ्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स व्हेन यू गो फॉर रोटेशनल आल्सो, वहां पे भी डेरिवेशन होंगे. तो हाउ एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज द ऑब्जेक्ट मेड? तो स्टूडेंट, जब भी मैंने रिंग के बारे में बोला था सभी से पहले, तो आई टोल्ड यू एलिमेंट्स को मैंने अलाइन किया था. ये क्या है मालूम है स्टूडेंट्स? ये क्या मालूम है? सपोज अगर मैंने ये सेमी सर्कल, सोचो कि ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है. स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैनर. अज्यूम है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा अजम्पशन करो स्टूडेंट्स. ये सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये सेमी सर्कुलर स्टूडेंट्स. ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, मैंने एक व्हाइट बोर्ड पे किया है. इसको अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना, मेरा एलिमेंट क्या है? तो ये जो मैंने dx लिखा है ना, हेलो, ये जो dx लिखा है ना, वो ये है थिकनेस. ये थिकनेस है, समझ में आ रहा है? ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, वो dx है, और मैंने शीट जैसे लिया है. तभी स्टूडेंट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अलोंग y एक्सिस ही लिया है. थिक, अगर मैं थिक लेता तो वो भी प्लेन हो जाता पूरा. स्टूडेंट्स, ये मेरा dx है. और अगर सपोज मैं एक फाइन लाइन लेता हूँ स्टूडेंट्स, और उस फाइन लाइन को मैं काट के एक सेमी सर्कल के हिसाब से मैं लेता हूँ, तो कहना से एक मेरा स्ट्रिप बन जाएगा. स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें ये फ्रंट व्यू दिया है, ये फ्रंट व्यू दिया, लेकिन तुम्हें तुम्हें इसके नीचे देखना है. अरे हाँ यार, ये dx है, ये dx है, उसका मास dm है, और सर ने क्या किया, वो dx को लिया है और एक स्ट्रिप कट कर दिया है. और अभी सर क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिप को अलाइन कर रहे हैं. इस स्ट्रिप को मैं अलाइन करूंगा. कहां से अलाइन करूंगा? सर, ये जो स्ट्रिप है, सबसे पहले मैं यहां से अलाइन करना शुरू करूंगा. समझ में आ रहा है? एक छोटा सा स्ट्रिप, एक छोटा सा स्ट्रिप मैं यहाँ पे लूंगा सेंटर से. फिर उसके बाद में दूसरा स्ट्रिप उसके बाजू में बिठाऊंगा, फिर तीसरा स्ट्रिप इसके बाजू में बिठाऊंगा, फिर चौथा स्ट्रिप उसके बाजू में बिठाऊंगा, फिर पांचवा स्ट्रिप में बाजू में बिठाऊंगा, फिर छठवां स्ट्रिप बाजू में बिठाऊंगा. और ऐसे वो स्ट्रिप में अलाइन करते गया, अलाइन करते गया, अलाइन करते गया. एम आई गेटिंग द एंटायर मास डिस्ट्रीब्यूटेड? तो कहाँ से मैंने शुरू किया? कहाँ से मैंने शुरू किया? जीरो से शुरू किया.
कहां तक मैं गया, कैपिटल आर तक गया क्योंकि ये रेडियस है। तो स्टूडेंट्स, डिड यू गेट योर लिमिट्स? Did you get your limits? I told you very clearly, wherever you get such kind of questions, first of all, try to understand how is the mass distributed. So the mass is distributed along the surface area. So should I go for lambda? Should I go for sigma? Or should I go for rho? सर जब भी आपने यूनिफॉर्म रॉड के लिए बोला था तो लैम्बडा गए थे, वायर बोला था तो लैम्बडा गए थे। सर यहाँ पे तो एरिया आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली सिग्मा आई कंसीडर विल बी, sigma will be what exactly the mass of the entire this will be capital M. What exactly the surface area of this particular plate? सर अगर पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, surface the area we consider, क्योंकि ये थिकनेस नेग्लिजिबल है स्टूडेंट्स, एक सर्कल ही है ना, पाई आर स्क्वायर, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, थिकनेस कितना है, थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द पेपर, सी द थिकनेस is negligible, it's a sheet of paper, it's a uniform thin. And students, the word uniform thin semicircle is very important. Mind you, the word thin was not given in the module also. लेकिन ये uniform thin होना जरूरी है. It should not be thick. So that is very important. What exactly the area will be? Sir, इसका circle का आधा होगा. तो pi r square divided by 2. तो 2 पर चला जाएगा मेरा. अभी उसमें से मैंने क्या किया? सर आपने एक एलिमेंट पोर्शन लिया है और उस एलिमेंट को आपने अलाइन किया है सेमी सर्कल में. तो उसका मास क्या है? सर उसका मास आपने बता दिया है dm. तो उसका एरिया क्या होगा? स्टूडेंट्स, ये जो अगर मैंने एलिमेंट यहां से यहां पे लिया तो उसका क्या होगा? सर ये थिकनेस देखो, जिसको मैंने यहाँ पे ले लिया dx, उसका लेंथ क्या होगा? सर लेंथ विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस? ऑफ दिस एलिमेंट? फ्रॉम द सेंटर x? स्टूडेंट्स कैन आई से ये टोटल कितना होगा? पाई x होगा कि नहीं होगा? हाँ स्टूडेंट्स, इसको सर्कमफरेंस में रखा है, half the circumference. What is area? So this particular semicircular object is made up of a strip, and strip is simply a kind of a rectangle. The strip is a form of a rectangle, जिसका thickness ये dx है, which is very small. Length pi x है. So what exactly area will be? Sir, area of this element dA will be what? Length into breadth. Pi x into dx. So can I put pi x into dx? क्या ये क्लियर हुआ? dm by da. इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तो ये नहीं बढ़ सकते. और तुम्हें लिमिट्स पता है कहां से कहां शुरू करना है. से मेरा लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है मेरा r. स्टूडेंट्स क्या इतना क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir, clear. अगेन स्टूडेंट्स, अगर तुम ध्यान से इसको वापस अगर घर पे बैठ के करोगे ना स्टूडेंट्स, तो प्लीज स्टूडेंट्स एक पेपर लेना. आई वांटेड टू लुक आउट फॉर डी. प्रोट्रैक्टर मेरे पास मैंने दिखा नहीं, वो सर्चिंग आउट फॉर प्रोट्रैक्टर. तो तुम क्या करोगे, एक शीट लो, ओके, और तुम्हारा जो प्रोट्रैक्टर है ना डी वाला, उसका एक सर्कमफरेंस से कट करो, डिवाइडर से, राउंडर से, परफेक्ट वो सभी सर्कल पार्ट निकालो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको इसके सामने बाहर निकालो, उसके नीचे का थिकनेस को ऐसा पेंट करो, और फिर एक स्ट्रिप वहां पे दिखाओ, और फिर सोचो कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स तुमने सेंटर से अलाइन करना शुरू कर दिया. छोटे छोटे स्टेप्स को काट के तुमने सेंटर से अलाइन करते गए. पहला स्टेप, उसके बाद में दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप. जैसे कि जब भी मैं रिंग के बारे में बता रहा तो मैंने क्या बोला था, रिंग मैंने कैसे बनाया. रिंग को बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, जो मैंने कहां से शुरू किया, एट x इज इक्वल टू 0. फिर मैंने एलिमेंट को और आगे बढ़ाया, और बढ़ाते कहां तक गया, x is equal to what? I'm taking it in terms of pi. 0 to pi along the length. I getting it circumference. तो मेरे लिमिट्स आ गए वहां पे. उससे मेरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हुआ, और वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा. क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन में जा रहा हूँ. यहाँ पे भी तुम्हें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, कंटिन्यूस. इसलिए तुमने 0 से शुरू किया, लोअर लिमिट, और कहां तक पहुंचे, फाइनल लिमिट तुम्हारा क्या होगा, r हो जाएगा. अभी देखो इसका एरिया कैसे पता चलेगा. सर ये हुआ लेंथ और ये हुआ ब्रेथ. तो ब्रेथ आपने बोला ये थिकनेस जो नीचे से दिखाई दे रहा है, इतना छोटा सा थिकनेस है. और लेंथ क्या होगा,
length will be pi x. What is area? Length into breadth. आ गया तुम्हारा. Now see, now your proof becomes easy. Now your proof becomes easy. Now substitute the values and get the answer accordingly. What is the distance of the element? What is the distance of the element from the center? Sir, it's x. And I've got the variable in terms of x. Now can I substitute the values and get the answer? Yes. So how do you go about further? तुम्हारा XCM तो 0 है, YCM में आएगा तुम्हारा. Agreed? Now if I happen to go for this integration of YCM, I gotta get what exactly your integration of YCM we consider will be equal to y into dm we consider. So how do I go about with that? My students? बताओ. So again, we'll resolve x and we'll get y. Pardon? Pardon? So we'll resolve x. Of course, you will be trying to go for it. यहाँ पे x को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना तुम्हें. तुम्हारा हेलो देखो वापस अभी तुम देखो स्टूडेंट्स. इसके पहले हम लोग ने किसका डेरिवेशन किया था बता सकते हो? एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. इसके पहले किसका डेरिवेशन किया था? एवरीवन. सर यू गिव अ डेरिवेशन फॉर अ थिन यूनिफॉर्म वायर. So can you tell me, students, my element is what? Infinitesimal element is simply a thin uniform wire only, na, of thickness dx. So students, ये जो मेरा element है, can you tell me what exactly y actually over here represents? What exactly y represents? Sir, y represents the YCOM of this element. समझ में आ रहा है? ये जो y है वो एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास है और इसका तो आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो. YCOM हमने निकाला है. Students, what is the value of YCOM, students? What is the value of YCOM? Sir, the value of YCOM for this uniform ring, sir, आपका ये जो X है वो YCOM हो जाएगा और YCOM for this particular element will be just below it. We consider above. ये इसका रेडियस होगा स्टूडेंट्स. ये देखो ये X है, एलिमेंट का रेडियस X है. I getting it? तो X/2 से ऊपर जाएगा. तो YCOM क्या हमने क्या डिराइव किया था YCOM? So YCOM will be 2r upon pi. Didn't I give the derivation for this? अगर मैंने ये रेडियस r ले लिया तो YCOM क्या होगा? 2r upon pi. क्या ये डेरिवेशन we had done it earlier? तो यही चीज तुम्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है. You don't, अश्मिता, you went for resolution. Yes, थीटा तुम लोगे. यानी वापस तुम क्या करवा लो? तुम एलिमेंट का आंसर निकाल रहे हो पहले. अश्मिता, अगर तुमने थीटा लिया, इसको रिजॉल्व करना किया तो तुम x को x cos थीटा लोगे, x sin थीटा लोगे. हाँ या ना? Yes, so again we'll get y. इनडायरेक्टली तुम क्या निकाल रहे हो? इनडायरेक्टली तुम क्या निकाल रहे हो? तुम YCOM फॉर द एलिमेंट निकाल रहे हो ना. और एलिमेंट है क्या तुम्हारा? और वो हमें पता है 2r by pi. क्या ये पार्ट, दिस इज द पार्ट व्हिच अ स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड. इज दिस पार्ट क्लियर? दिस इज फॉर थिन Yes, sir. uniform wire. Please, students, is this clear to all of you all? Yes, sir, clear. Okay. Now when you get at YCM, हाँ तुम्हें YCM मिल गया. अभी देखो, अभी डालो. So now what exactly the equation will be? Sir, ये YCM for the element है. So YCOM for the entire disk, okay, will be integration of V को क्या लिखूंगा? Instead of 2r, it will be x, students. ये ध्यान में रखना. Into what? dm. What is dm over here, students? What is dx over here? dm क्या लिखोगे? dm को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, students. What is dm? I'll put it directly, students. What is dm over here? dm will be 2m pi x into dx upon pi r square. X is equal to 0 to x is equal to r upon capital M. Agree, students? Do you have any cancellation for this?
YCO में कुछ cancellation तुम्हें दिखाई दे रहा है अंदर? तुम बोलोगे sir pi and pi is getting cancelled. Agreed. Constant terms में 2 2s are 4. Are you getting it? So 4 will be outside. One of the pi is also outside. R square is also outside. Capital M also will be outside. ये M वो भी बाहर आ जाएगा. ये देखो ना, ये M बाहर निकाल दिया, ये नीचे वाला M भी बाहर आ गया. Agreed. So students 2 2s are 4. One of the pi gets cancelled. एक pi बाहर आ गया. ये R square बाहर आएगा. ये M न्यूमरेटर का आ गया. ये M डिनोमिनेटर का आएगा. ब्रैकेट इंटीग्रेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन में ये x है स्टूडेंट्स. 2x. So 2x into x into dx. 2 तो बाहर निकाल दो तो कहना चाहिए it will be x square into dx. Where x is equal to 0, so x is equal to r. Can I cancel m? Yes. So what exactly I'm getting? YCM क्या हो जाएगा? 4 upon pi r square into bracket what exactly I'm getting it? Integration of x square into dx. वो क्या बन जाएगा? So it will be x cube by 3. Lower limit 0, upper limit capital R. X is equal to 0 to r. Can I move 3 outside? Yes. So what is my answer for this will be? Sir, YCOM will be 4 by 3 pi r square. X cube, upper limit will be r cube minus 0 cube. So what exactly will be 4 r cube upon 3 pi r square? So can I say it's 4 r upon 3 pi? 4 r upon 3 pi. Is this clear, students? Students, क्या ये clear हुआ? Yes, sir. यानी Yes, sir. समझना क्या है मालूम है कि तुम्हारा जो शीट है वो थिन यूनिफॉर्म शीट है. एक्सप्लेन रखो, वाई प्लेन रखो. जब भी मैंने शीट को तुम्हें ऐसा वर्टिकल दिखा दिया, उसका मतलब देयर इज नो मास डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्स. देखो मेरा एक्सियम 0 हो गया, मेरा पूरा शीट वाई पे ही है और वो वाई प्लेन है, उसके अंदर भी मैंने एक्स वाई नहीं लिया स्टूडेंट्स. वो एक शीट है, थिन शीट है, तो आई हैव अज्यूम्ड दैट द एंटायर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वाई एक्सिस. To get for the entire plate, how is a plate constructed? अगर मैंने तुम्हें बोला कि चलो एक सेमी सर्कुलर प्लेट बना दो, तो कैसे बनाओगे? छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लो, स्ट्रिप्स ले लो पेपर, और पेपर को स्ट्रिप्स को अलाइन करना शुरू कर दो सेंटर से लगा के, तो पूरा तुम्हें एक प्लेट मिलेगा, तो तुम्हें लिमिट्स मिल गया. लेकिन तुम एक प्लेट को तुमने एक सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे रख दिया, तो वो तुम्हारा थिन वायर हम समझते हैं. तो थिन वायर के अंदर जब भी तुम वाई डीएम करते हो, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 2x/5. एंड ये 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, how is the disk formed, with what kind of element structures? That has to be taken care of. Secondly, how are you going to place the elements to form the entire object, center to extreme? That will give you limits. And third, when you try to go for that element, at what distance you are keeping the element at x? तो इसका तुम center of mass निकालोगे, तो we need to go for the y hat. ये 3 चीज अगर तुम्हें आती है and थोड़ा सा calculus part you know it, you'll be able to get it. The fourth important part is how the mass is splitted. Sigma, mass per unit area. Area of semicircle is pi r square by 2. This is dm by dA. So sigma is dm by dA. What is dA? Length into breadth. Is this clear, students? Next lecture, students will be continuing further ahead. Kindly revise this and kindly revise the formulas also. Okay, students?